Okay. Hi students, good evening and welcome to the legal game presented by Unacademy. I'm Sarthak Sharma. I'm your legal reasoning expert at this wonderful platform that makes your learning easy, effective, efficient and interesting. And I welcome you all to this very going to discuss the fundamental rights which is enshrined in part 3 of the Indian Constitution. It is the most important part of the whole Indian Constitution. Obviously इंडिया में जितने भी laws हैं उनमें सबसे ज्यादा important है the Indian Constitution because it is the supreme law of the land. And इस supreme law of the land means the Constitution of India. इसका भी heart and soul है fundamental rights. The part 3 of the Indian Constitution. So let's start with the class, the part 1 of fundamental rights, in which I'm going to discuss some very important details related to part 3 of the Indian Constitution, which is fundamental rights. So let's start with this class. And yes, आज मैं आपके कुछ basic concepts in today's class we are going to discuss some basic concepts related to fundamental rights, its origin, its nature, and some most important articles of fundamental rights. It's part 1. We are going to take part 2 as well क्योंकि fundamental rights इतना vast topic है कि एक class में cover up नहीं हो सकता है. So let's start without any further delay. Okay, so let me give you an intro of myself. I'm Sarthak Sharma. I'm a penultimate year law student at Faculty of Law, Jamia Millia Islamia. I have more than 2 years of teaching experience and I have mentored more than 10,000 students. I will rather say that I have been companion to more than 10,000 students in their preparation journey, and a lot of my students have been rankers in the prestigious law entrance examinations like CLAT, SLAT, PLAT, JMI, LET, AILET, MHSET, etc. A lot more like CUCET and all that are not in this list, and that's why I put etc. So yes, I hope you all are also eager to add your name to this list, and I'm damn sure that आपकी और मेरी पार्टनरशिप मिलके आपको भी रैंकर बनाएगी. So stay with me, and students, you can join me on Telegram. The link is on your screen also in the description box, so you can access the link. And today, yes, the live chat device is not working, so आज मेरी screen पर live chat visible नहीं है. So if you have any doubt from today's class, then you can just put the doubt in the comment section of this class, and मैं comment section से उस doubt को read करके I will answer it. You can either ask the doubt on the Telegram group or you can put the doubt in the comment section because today the live chat is not available. Okay, students, you can go for the subscription of Unacademy. It can be of either for 1, 3, 6, 9, 12, 18 or 24 months, whichever is more feasible to you. Go with it. Right now there is a hefty discount, and in addition to this discount, you can avail an additional 10% discount by using the code SRT10. Okay, and some students have said this thing to me as well कि सर lump sum में नहीं, अगर installments में हो तो ज़्यादा better होगा. So yes, EMI options is also available for 6 months or above subscription. You can have a look over the unique features of Unacademy. Means we cannot put all the unique features on one single screen. Possible ही नहीं है because in Unacademy के बहुत सारे unique features हैं. The U in Unacademy stands for uniqueness. But yes, the 6 top-notch features, the unique features of Unacademy are very deep knowledge about any particular topic. Then अपनी उस knowledge को waste मत जाने दीजिए. उस knowledge को और बढ़ाइए, multiply कीजिए. And yes, knowledge is the only thing जो बांटने से बढ़ती है. अगर हम पैसा बांट रहे हैं तो ऑब्वियसली कम होगा, इट डिवाइड्स. बट वी व्हेन वी इम्पार्ट नॉलेज, जब हम एजुकेशन मींस विद्या बांटते हैं, तब वो और ज्यादा मल्टीप्लाई होती है. सो मल्टीप्लाई और नॉलेज बाय imparting it with your fellow mates, by sharing it with your fellow mates. Okay, students, I hope you all are preparing for an Academy Law Aptitude test. It's a 60-minute, 60 question, 60 marks test. Every Saturday at 11 a.m. this test is conducted. So do appear for it. If you have not appeared in yesterday's ULAT, then go and appear from this week onwards, means the coming week onwards. Weekly T20 test. Okay, India के अब chances almost zero हैं to win. Consistency को, आपकी steadiness को बरकरार रखिएगा. And yes, consistency is your biggest weapon to win this war. ये युद्ध जो है, इसको जीतने का सबसे बड़ा हथियार है consistency. And this 20 minutes quick revision test will help you to be consistent in your studies. 20 minutes, 20 questions and 20 marks. The special classes are free classes.
So do join these classes by downloading the Academy application. There in the invitation code also you can write SRT10. It will unlock all the free features of an academy for you. Indian Constitution has 25 parts. उनके तराजू में एक तरफ 24 parts रखूं, बाकी के 24 parts एंड एक साइड सिर्फ पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स है, ओके, जो कि फंडामेंटल राइट्स है उसको रखूं, देन पलड़ा भारी पार्ट 3 मींस फंडामेंटल राइट्स का होगा. इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट. सो यस, पार्ट 3, that is fundamental rights, is the single most important part of the Indian Constitution, and that's why it is very important for you to have a deep understanding and knowledge of fundamental rights. हमें रटेंगे नहीं, हम सब कुछ समझेंगे. We will read fundamental rights like a story because it's a very interesting part as well. It is, but there are some more things as well. थोड़ा सा deep में जानेंगे the whole story, that how fundamental rights were added, what was its origin, what is the in which particular law this thing would be done. A was killed by B. Obviously, A को B ने गोली मार दी. B is also a private individual. A is also a private individual. It is murder, and for this B would be prosecuted under section 302 of IPC. Indian Constitution कहीं रोल में नहीं आया, बट क्या A का right to life violate नहीं हुआ? Right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty says that no person shall be deprived of his life and personal liberty except the procedure established by law. And here B had not followed the law. B is a wrongdoer, B is an offender, B is a murderer. B ने A को गोली मार दी. यहाँ पर राइट टू लाइफ वॉलेट हुआ, बट राइट टू लाइफ वॉलेट किसने किया? एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने. दैट्स व्हाई देयर इज नो ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट, देयर इज नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. देयर इज सिंपली crime had been committed by B, and B would be prosecuted. Right to life, which is a fundamental right, had been violated under Article 21. And so because a fundamental right had been violated, so A's family can directly file a writ in the Supreme Court under Article 32. Means they can directly approach the Supreme Court. यहाँ पर केस चलेगा district court में, in the districts and session, in the sessions court, inside district level. Here you can directly go to the Supreme Court. So we come to a very simple conclusion that fundamental rights can be violated only by the state and not by a private individual. फंडामेंटल राइट्स हमेशा एक स्टेट ही वॉयलेट कर सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं. अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन से किसी की जान जाती है तो मर्डर का केस होगा. राइट टू लाइफ तो वॉयलेट हुआ है, बट यू कैन नॉट क्लेम वॉयलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट बिकॉज आई एम नॉट अ स्टेट. But if by state section, by government section, someone dies, then it is violation of fundamental right. It is violation of right to life. Recently, मुनमुन दत्ता जो बबीता जी का रोल करती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, उन्होंने एक ऐसा वर्ड यूज किया जो कि abolition of untouchability को violate करता है, which is a fundamental right. बट मुनमुन दत्ता के ऊपर कोई आर्टिकल 32 में रिट फाइल नहीं हुई. FIR was filed against him. उनके अगेंस्ट FIR फाइल हुई for under the SC/ST Act, okay, for a crime. So here no fundamental right was violated because she is not a state. I hope you are clear it why we are studying it. You know the answer. The answer is because it is the single most important part. How to study it? Stay with me. समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है. And guys, again I'm reminding you that the live chat is not with me today, unfortunately. So if you have any doubt, you can just put it in the comment section and I will definitely answer it. Okay, moving forward. Part 3, as I said that no, the answer would be 6, not 23. ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज्यादा रहता हूँ, मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं. In a class, I was teaching the students that fundamental rights, that is part 3, ranges from Article 12 to Article 35. Then I asked the question, okay, how many fundamental rights are there? They said, sir, 23 because there are 23 articles. क्योंकि part 3 में 23 articles हैं तो 23 fundamental rights होंगी. No, part 3 में 23 articles हैं, but सिर्फ 6 fundamental rights हैं. Fundamental rights, every fundamental right is a group of other rights as well. Those are sub rights under a specific head. So originally there were 7 fundamental rights. Right to property को हटा दिया गया है. At present there are 6 fundamental rights. We are going to discuss all 6 of them. So fundamental right is a mammoth portion of our Indian Constitution. I told you this thing, and a majority of under Article 32, because Article 32 is in part 3 itself.
आर्टिकल 226 इज नॉट इन पार्ट 3 ना, आर्टिकल 12 से 35 के बीच 226 नहीं आता है. दैट्स व्हाई द रिट्स इन हाई कोर्ट कैन बी फाइल्ड फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर राइट्स. But Article 32 is in Part 3 only, and that's why it is itself a fundamental right. It is right to constitutional remedies, in which you can file a writ. There are five types of writ: certiorari, quo warranto, mandamus, habeas corpus, and probation. We will discuss all the five writs in a specific class devoted to it. But Article 32, which is right to constitutional remedies under it, you can file a writ in the Supreme Court of India for violation of only a fundamental right, because it is itself a fundamental right. So it is narrower. It has a narrower scope. It has a narrower scope. Okay. Not against a private individual, and that's why सबसे पहला ही आर्टिकल स्टेट को डिफाइन करता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट आप सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही क्लेम कर सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं. मैंने सबसे इजी एग्जांपल दिया, अगर ए बी को मारता है तो बी के फैमिली मेंबर्स ए के अगेंस्ट मर्डर का केस करेंगे, राइट टू लाइफ के वायलेशन के लिए रिट फाइल नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते, because they cannot claim fundamental right against a private individual, and the murderer is a private individual. But if A, who is a private individual, is killed or died due to state's action, due to states means government's negligence, government bridge बना रही थी, bridge में कुछ negligence हुई, okay, there were some compromises due to which people died. Here it is not murder, it is right violation of right to life. Here it is violation of fundamental right, because now the right has been claimed, the right is being claimed against this. Clear? So I gave you a basic overview of part 3. After the basic overview, let's discuss the concept and nature of fundamental rights. As I told you that fundamental rights, what does the word fundamental means? ये जो शब्द है fundamental, इसका मतलब क्या है? What does the word fundamental means? Basic, or you may say underlying, or you may simply say the foundational. Fundamental means foundational, most important. So as the name is itself suggesting, these are those rights that are the most important, the foundational right of a human being. एक इंसान के जो foundational rights हैं, and that's why fundamental rights are the basic rights that every human being possesses by virtue of being human. हमें rights इसलिए नहीं है. Some of the fundamental rights are available to persons, some are available to citizens. A fundamental right is human right, मानव अधिकार, or natural rights, those rights that are given to us by nature. So majority of fundamental rights are human or natural rights, and that's why they are available to persons. कुछ exceptions जरूर हैं, कुछ fundamental rights सिर्फ citizens को हैं, persons को नहीं है, but most of them are available to persons. Persons means humans, which includes Indian as well as a foreigner, citizens as well as non-citizens. So the biggest nature is that fundamental rights are the most basic rights, and the other word that can be used for them is human right or natural rights. क्योंकि ये हर इंसान को सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंसान है. And it should be noted that fundamental rights are available only against are available to an individual only against a state action. Most important thing again, to an individual only against a state, not against a private individual. I gave you a very basic example. So always remember, when you are doing the principal fact questions or you are attempting the passage based questions, then in the facts you should keep in mind कि उस फंडामेंटल राइट को एक स्टेट ने वॉलेट किया है या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल ने. अगर प्राइवेट इंडिविजुअल ने वॉलेट किया है तो फिर फंडामेंटल राइट का वॉलेशन नहीं हुआ. इफ आई एम मेकिंग अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट समवन, okay, then it is not a violation of fundamental right for that person. If I, जैसे मैंने बताया, SC/ST एक्ट एक अलग से क्राइम है. किसी के लिए SC/ST वाले वो वर्ड्स यूज करना is a crime for which an FIR will be filed against you under different sections of IPC as well as SC/ST Act. But the same work is done by the state, then it is simply violation of Article 17 in the Constitution of America, United States of America. The fundamental rights are known as Bill of Rights. And यहाँ से ही हमने
फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? वाई? कोई बता सकता है? Because Magna Carta that came in 1215 is world's first written document related to rights of citizens. Fundamental rights are also rights of citizens and non-citizens as well. That's why fundamental rights are known as Magna Carta of the Indian Constitution, because मैग्ना कार्टा दुनिया का पहला डॉक्यूमेंट था जो कि राइट्स ऑफ सिटीजन से रिलेटेड था, जिसमें राइट्स ऑफ सिटीजन दिए हुए थे। एंड इट इज नॉट अमेरिकन डॉक्यूमेंट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स says that sir Magna Carta was an American document। गलत हो जाएगा, इट वॉज एन इंग्लिश डॉक्यूमेंट। आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई। बी एन राव, हु वॉज दिस पर्सन? बी एन राव वॉज एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द लीगल एडवाइजर। इसके अलावा ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जस्टिस भी रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। बट बी एन राव, हु वॉज एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज एडवाइजर, वेंट टू अमेरिका। वो अमेरिका क्यों गए? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इंडिया अमेरिका से ही बोरो कर रहा था। सो ही वेंट टू अमेरिका एंड देयर ही मेट जस्टिस फ्रैंकफर्टर। जस्टिस फ्रैंकफर्टर कौन थे? जस्टिस फ्रैंकफर्टर इज अ वेरी फेमस जज ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस फ्रैंकफर्टर एट दैट टाइम। बी एन राव मेट जस्टिस फ्रैंकफर्टर एंड ही जस्ट आस्क्ड हिज एडवाइस कि आप हमें बताइए कि हम आपके फंडामेंटल राइट्स को सीधे कॉपी पेस्ट कर लें, मींस जैसा आपके बिल ऑफ राइट्स हैं सेम हम वैसे ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख लें। व्हाट ओनली डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। सो रिमेंबर, in Indian constitution there is procedure established by law, and in US constitution there is due process of law। तो जस्टिस फ्रैंकफर्टर की एडवाइस थी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जगह। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? आई विल टेल यू इन द सेकंड पार्ट, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ होमवर्क फॉर टुडे। ये आपका होमवर्क है। यू नीड टू take out, you need to understand, you need to study the difference between procedure established by law and due process of law. First of all, you do it and then I will teach you. So it is a homework that I will discuss in the second part. अब मैंने आपको hint भी दे दिया है। Now you need to find out the difference between procedure established by law, which is in India, and due process of law, which is in America. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। It is the international document, the most important international document related to rights of the people of this world, rights of the citizen of this world, you may say. So UDHR that was adopted on in 1948 on which date? 10 December. 10 December को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट हुआ था in 1948 at Paris। कहां पर? पेरिस में। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यूडीएचआर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। जस्ट लाइक आई सेड दैट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सिमिलरली एट द इंटरनेशनल लेवल, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट इज यूडीएचआर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन हैड बीन इन योर एग्जाम अ लॉट ऑफ टाइम, दैट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? द राइट आंसर इज 10th of December। And do you know, most of the rights that are given in UDHR, they are in the fundamental rights part 3 of the Indian constitution as well. Like right to life, right to equality. UDHR starts with we the people of United Nations. Indian constitution preamble starts with we the people of India. US constitution starts with we the people of United States. UDHR में जितने भी human rights हैं, most of them are in Indian Constitution as fundamental right। जितने भी मींस आप अगर यूडीएचआर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को रीड आउट कर रहे हैं। एंड इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू इट। ओके, यूडीएचआर में इंडिया इज अ सिग्नेटरी, दैट्स व्हाई। इंडिया ऑफ ऑल, लेट्स सी द 6 फंडामेंटल राइट्स। एज आई टोल्ड यू देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली देयर वर 7, ओरिजिनली 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी को बाद में हटा दिया गया।
राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के पीछे की भी पूरी कहानी है, जो शुरू होती है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी से लेके गोलकनाथ केस से लेके राइट टू प्रॉपर्टी को फाइनली एबॉलिश करने तक बाय आर्टिकल 44, सॉरी, अमेंडमेंट 44, 44th अमेंडमेंट in 1978. It was shifted from Article 31 to Article 300A, means out of Part 3. Earlier, right to property was a fundamental right. Now it is only a constitutional right but not a fundamental right. So originally there were seven, presently there are six fundamental rights. So six are right to equality, which ranges from Article 14 to 18. Article 14 says equality before law. Article 15 says equal freedom includes right to life. Even right to education is a part of it. Right against exploitation, which includes abolition of child labor, abolition of slavery, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Okay, these are the six fundamental rights, and you can see the range. So we will discuss all of them in detail. Let's see Article 12, that is state. As I said, fundamental rights starts with Article 12. It ends at Article 35. ये पार्ट थ्री की का फर्स्ट आर्टिकल है, ये पार्ट थ्री का लास्ट आर्टिकल है. तो जो पार्ट थ्री, जैसा कि मैंने बताया, दैट फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल only against the state and not against a private individual. That's why fundamental right, the part 3 starts with the definition of state. Article 12 defines state. Public organization state में आएगी. The police will come under the purview of state and I or you will not come under the purview of state. This thing ये तभी पता चलेगी जब कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रोविजन बताएगा. तो आर्टिकल 12 starts with the definition of state because fundamental rights can be enforced only against state, not against any person. So according to Article 12, state includes government and parliament of India, means the union government, union, executive and legislature. Parliament, legislature. Remember there are three organs of government. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 सबसे इंपॉर्टेंट है. मींस फंडामेंटल राइट स्टार्ट विद आर्टिकल 14, राइट? इन द प्रीवियस slide you saw this thing. The six fundamental rights started from article 14 ended at article 32. 35 तक भी नहीं. So legislature and judiciary, these are the three organs. So according to article 12, the definition says that state includes government, government matlab executive, and parliament of India, means the union executive and the union legislature, and the government and legislature of each states. इसका मतलब इंडिया की सभी स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, executive organ as well as legislative organ, that will also be included under the definition of state, and all local or other authorities, means अब other authorities means कोई भी दूसरी authority within the territory of India or under the control of government of India. Any authority which is under the control of government of India. Police is obviously under the control of state. Okay, अब पे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट नहीं दिए जाएंगे, आपको अदर ऑथोरिटीज ही दी जाएंगी. सो रिमेंबर, इन अदर ऑथोरिटीज, ऑल द ऑथोरिटीज दैट आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आती हैं. इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस, द पब्लिक ऑफिसर्स, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, when they work in the course of employment as the servant of the government, they falls under other authorities. Every IAS officer, every district magistrate, all of them are गवर्नमेंट सर्वेंट्स. बट एक चीज यहाँ पर देखने की है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ही स्टेट के पर्व्यू में आते हैं, जुडिशियल ऑर्गन नहीं. क्यों? वाई? बिकॉज एक जज का, ऑब्वियसली जज किसी को फांसी की सजा भी दे सकता है. वो इंसान ये नहीं कहेगा कि मेरा आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ वायलेट हुआ है. सो रिमेंबर, फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड ओनली अगेंस्ट द स्टेट. आप एनफोर्स कराएंगे जुडिशरी में. स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Simply Article 12 says that
सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर जितने भी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं वो स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, जुडिशियल ऑर्गन्स नहीं आते. मींस द कोर्ट्स डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट. अ कोर्ट कैन नॉट वायलेट समवन्स फंडामेंटल राइट. द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर कैन. दैट्स व्हाई, बिकॉज एक कोर्ट का काम होता है फंडामेंटल राइट एनफोर्स कराना, प्रोटेक्ट करना. So I hope it is clear that what all comes under the purview of state. Like a legislature, the Parliament of India bought a law और वो law किसी fundamental right को violate कर रहा है. Then the Supreme Court of India will come up with a decision in which it will declare that law ultra vires to the Indian Constitution because it is violative. So Supreme Court is the protector and the protector can never be the violator. Article 13, then Article 13, right to property को state violate कर रहा था. Okay, and it's tried to bring laws and then it tried to safeguard that law by taking it away from the purview of judicial review. The ninth schedule, I hope you know about it. If you do not know, then we will definitely take a class over it. बट फंडामेंटल राइट्स को स्टेट कैसे वॉलेट कर सकती है? एक लॉ लाकर. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई लेजिटिमेट तरीका नहीं है गवर्नमेंट के पास. लाइक गवर्नमेंट ब्रिंग्स अ लॉ which violates any of the fundamental right, the law would be declared ultra vires by the judiciary. So Article 13 defines law. And Article 13 says, Article 13 has a total of 4 clauses. Out of 4, originally सिर्फ 3 clauses थे. Originally there were 3 clauses. And later the 4th clause was added. अब 4th clause क्यों ऐड हुआ उसकी मैं पूरी स्टोरी बताऊं. पहले 1950 से पहले जो लॉज इंडिया के अंदर फोर्स में है, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी void. Means clause 1 is talking about pre-constitutional laws. I hope you are clear. Clause 1 is saying those laws that were in force in India before the commencement of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले वो लॉज इंडिया में थे. इंडिया में लॉज तो पहले से भी हैं. स्टिल वी विल यू विल सॉ द मेजॉरिटी ऑफ लॉज. आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, 1872 का है, इट्स अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. आप इंडियन पिनल कोड पढ़ रहे हैं, 1860 का है, इट इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. यू विल रीड सीआरपीसी. सीआरपीसी इज नाउ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें अमेंडमेंट्स हो गए हैं. सीपीसी इज 1908, अगेन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल. इंडियन एविडेंस एक्ट सो फार उस हद तक जिस हद तक वो इस पार्ट मतलब पार्ट 3 के वॉयलेशन में है. ऑल द लॉज दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन इंडिया, द मोमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एनफोर्स्ड, दे हैव ईदर they should either reconcile with the fundamental rights or they will be declared void. If they are inconsistent with fundamental rights, means violate any of the fundamental right, then it would be void. Like for example, if there is a law which is which is in force in India since 1850. वो लॉ फोर्स में है इंडिया में 1850 तक. बट 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ तब एक फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वो लॉ वायलेट कर रहे हैं. लाइक द सेंसरशिप लॉज. मैं आपको लाइव एग्जांपल ही देता हूँ. सेंसरशिप लॉज ब्रिटिशर्स लेकर आए थे ताकि उनके अगेंस्ट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने के बाद जो लॉज बनेंगे. व्हाट इज इट सेइंग? दैट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, शैल नॉट मेक, स्टेट को नहीं बनाना है कोई भी ऐसा लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part. This part means part 3 because ये part 3 का ही आर्टिकल है. And any made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. So what is clause 1 and clause 2 simply saying? Clause 1 कह रहा है कि इस देश में हम अब 26 जनवरी 1950 की बात करें. इस देश में 26 जनवरी 1950 मींस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जितने भी कानून हैं उन सभी कानूनों को चेक किया जाएगा कि क्या वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट हैं. अगर हैं तो वो वैलिड है और अगर नहीं है तो फिर वो उस एक्सटेंट तक वॉइड है. इफ देयर इज अ लॉ which is in force from 26 January 1950 onwards, the law became void. Clause 2 is saying कि कोई लॉ बनेगा ही नहीं फ्यूचर में. आफ्टर 26 जनवरी 1950 कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे.
मीन्स नाउ 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो गया। ऑन 20 नाउ ऑन 27 जनवरी 1950 और यू मे से टुडे एज वेल, उसके बाद की किसी भी डेट को, आज भी अगर पार्लियामेंट एक लॉ लेकर आती है जो कि राइट टू इक्वालिटी को वॉयलेट करता है, द लॉ वुड बी void from the very beginning. So remember, this question may come that which of the following laws would be void ab initio? The law which was made, and there shall be year or date of the law, that XYZ law of the year 1800, ABC law of the year 2020. And which of the following would be void ab initio? This one would be void ab initio were valid. ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द डे इट वाज मेड, वो तब से वॉइड नहीं है। अब ये लॉ 1815 से वॉइड नहीं है, ये 1850 से 1950 तक, मतलब 100 साल तक वैलिड था, उसके बाद वो वॉइड हुआ। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो, अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है तो उसके बाद भी वैलिड है। एंड दिस लॉ इफ इट वाज मेड इन 2020, सो 2020 में उसी पर्टिकुलर डेट से वो वॉइड है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर नाउ इन फोर्स। So clause 1 talks about pre-constitutional law, clause 2 talks about post-constitutional law. मैंने बहुत simplify करके समझाने की कोशिश की है. Still, if you have any doubt, you can put it in the comment section. I will definitely answer. Clause 1 and clause 2 clear that what does law stands for. So any law which was in force in India, उन सभी को चेक किया गया. अगर वो कंसिस्टेंट थे तो ठीक, वेल एंड गुड. इनकंसिस्टेंट थे देन मींस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर भी फंडामेंटल राइट्स वॉलेट नहीं कर सकते हैं. Order, by law, rule, regulation, notification, custom, usage, anything which is in the territory of India. Okay, this clause is not very important, still you can read it. Let's read it. Laws in force includes laws passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either in at all or in particular areas. I hope you are clear that what does law means. Law की बहुत simple है, यहाँ पर inclusivity बताई गई है, that what all are included in laws. And the fourth one, it was not originally a part of Article 13. इसको बाद में ऐड किया गया. मैं इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा. एंड इसकी स्टोरी बताने से पहले मैं कुछ 13 आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 से ये दो डॉक्ट्रिन्स इवॉल्व होती हैं. So we will read these doctrines. We will read these doctrines, okay? So yes, we will have a specific discussion over them. Clause 1 and clause 2 of Article 13 are very important. Clause 3 is not that much important. Clause 4 is most important because it was not originally, it was later added. किस year में add हुआ? 1971 में. By which amendment? 24th amendment. अब add क्यों हुआ? Let me tell you the story. लैंड रिफॉर्म्स आए, जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जमींदारों की जमीन को एक्वायर करना शुरू किया देश में. गोलकनाथ एक बहुत ही बड़े जमींदार थे पंजाब में जिनकी लैंड एक्वायर हुई एंड फाइनली ही फाइल्ड अ केस फॉर वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट. ही फाइल्ड अ रिट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 32 उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था. राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं. फंडामेंटल राइट्स कांट बी अमेंडेड. बट वो तो हो रहे थे, होते हैं अमेंड. आर्टिकल 21 ए ऐड हुआ है, आर्टिकल 31 रिमूव हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी हैड बीन रिमूव. तो वो कैसे हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दैट फंडामेंटल राइट्स कांट बी अमेंडेड. तो एट दैट टाइम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज इन पावर एंड yes, Indira Gandhi was a very powerful prime minister, one of the most powerful prime minister of this nation till now. So इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट वी विल रिवर्स द ratio of Golaknath versus State of Punjab. We will reverse the decision of Supreme Court. Supreme Court and legislature के बीच उस वक्त WWE चल रहा था. So in 1967 Golaknath versus State of Punjab, Supreme Court said that fundamental rights can't be amended. आप fundamental right को amend नहीं कर सकते हैं. And you can not amend. आपके पास जो आर्टिकल 368 में पावर्स हैं उसके अंडर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी पार्ट अमेंड कीजिए बट फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकते हैं. ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन टाइप, सो वी कैन रिमूव इट. आर्टिकल 368 के अंडर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर होता है देन इट इज नॉट लॉ अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13. इट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13. मीन्स
बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, उसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं। बिकॉज लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 13। इट वॉज द अमेंडमेंट, सो हेयर द रेशो ऑफ गोलकनाथ वॉज ओवरटर्न्ड। जब एक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के लॉ बनाए हुए लॉ को पार्लियामेंट रिवर्स करती है, नलिफाई करती है, तब उसको कहते हैं ओवरटर्न करना। एंड लेटर ऑन इसी डिसीजन को, पार्लियामेंट के इस डिसीजन को जस्टिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन केसवानंदा भारती केस इन 1973, इन केसवानंदा भारती केस इन 1973। क्लियर? सो रिमेंबर, जब कोर्ट के बनाए हुए लॉ को कोर्ट ही रिवर्स करती है, मींस एक छोटी बेंच एक स्मॉलर बेंच के जजमेंट को रिवर्स करती है, एक बिगर बेंच या हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करती है, लॉ को रिवर्स करती है, देन इट इज कॉल्ड ओवर रूल। ओवर रूल, like Golaknath case was overruled in Keswananda Bharati case. But do you know that Golaknath was overturned by 24th Amendment in 1971? दोनों में इफेक्ट सेम हुआ, दोनों में रिवर्स हुआ, बट रिवर्स करने वाली ऑथोरिटी चेंज हो गई। इन ओवर रूल, a court reverses the decision or law of court, but in overturn, the parliament, the legislative organ of the government reverses the decision of judicial organ of the government. कोर्ट के लॉ को पार्लियामेंट रिवर्स करती है। सो इट वाज अ वेरी स्मॉल स्टोरी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कहा गया फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, थिंग वाज जस्टिफाइड एंड केस वन इन द भारती केस एज वेल व्हेन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज इवॉल्व्ड। गोलकनाथ केस तो कंप्लीटली लेजिस्लेचर के अगेंस्ट था, कहा कि अमेंड ही नहीं कर सकते हो। 24th अमेंडमेंट ने कहा कुछ भी अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में। केसवानंदा भारती केस इन दोनों के बीच में एक मिडिल पॉइंट था, जिसमें कहा गया अमेंड तो किया जा सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। वी विल डिस्कस द होल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द सज्जन सिंह केस, द शंकरी प्रसाद केस टू द मिनेरवा मिल्स केस। ओके, बट आई होप इट इज क्लियर, द डेफिनेशन ऑफ लॉ इज क्लियर टू यू, how the fourth clause was added and what was the reason behind adding clause 4. Now let's discuss some essential constitutional GK snippets related to fundamental rights. बाकी के fundamental rights जो article 14 onwards हैं, we will discuss in part 2. And before ending, I'm just going to give you some snippets related to fundamental rights for our constitutional GK. Of India, Iron Man of India, the person who played a pivotal role in यूनिफाइंग द प्रिंसली स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, एंड जिनके बर्थडे को हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स बिकॉज द 7th फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, वाज रिमूव्ड in 1978 by 44th amendment. Earlier it was in article 31, अब इसको कट पेस्ट कर दिया गया आर्टिकल 300A में। It had been omitted from here and it is a constitutional right now. Remember, the smaller circle is fundamental right and the bigger circle is constitutional right. Every fundamental right is a constitutional right, but every constitutional right is not a fundamental right. हर एक राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया है, बट वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक स्पेसिफिक पार्ट में दिया है, पार्ट 3 में। Fundamental rights are those rights. Fundamental rights are both rights of citizens. The only difference is that fundamental rights are justiciable rights by virtue of Article 32. आर्टिकल 32 की वजह से ये जस्टिशिएबल हैं, अगर ये वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डीपीएसपी आर नॉन जस्टिशिएबल राइट्स। इफ द गवर्नमेंट फुलफिल्स देम, वेल एंड गुड। इफ द गवर्नमेंट डू नॉट फुलफिल्स देम, यू कैन नॉट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो अर्लियर राइट टू एजुकेशन वाज अ नॉन जस्टिशिएबल राइट। अब गवर्नमेंट चाहे तो फुलफिल करे, चाहे तो फुलफिल ना करे, आप केस नहीं कर सकते थे। ये आपका राइट तो था बट नॉन जस्टिशिएबल। नाउ राइट टू एजुकेशन इज अ जस्टिशिएबल राइट बिकॉज इट इज इन पार्ट 3। पार्ट 4 से कट किया, पार्ट 3 में पेस्ट किया सिंपली। सो राइट टू एजुकेशन हैज बीन पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस 1950, 26 जनवरी, बट इन डीपीएसपी इन 2002 गवर्नमेंट को लगा कि हम पे अनफ फंड्स हैं कि हम इसको एक जस्टिशिएबल राइट बना सकें, तो इसको आर्टिकल 21A पार्ट 3 में पेस्ट कर दिया, so that if any of the state government is not fulfilling it. In Minerva Mills case, he said that Article 14, Article 19 and Article 21 forms up the golden triangle of the Indian constitution. Very important. This question may be asked.
Article 14, 19 and 21. And out of them, Article 14 and 21 are available to persons, 19 is available only to citizens. During emergency, ओके इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं। तो सब आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन कौन से किस ऑर्डर में सस्पेंड होते हैं, बट यस विच इज द फर्स्ट राइट, दिस क्वेश्चन हैड बीन in your examination a lot of time, that which is the first right, which is the first fundamental right which is suspended when emergency imposed। जैसे इमरजेंसी इंपोज होगी सबसे पहले गवर्नमेंट के खिलाफ आपकी बोलने की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वही पावर जाएगी ना, कहीं भी फ्रीली इंडिया में रोम करने की पावर जाएगी। सो द क्लस्टर ऑफ सिक्स फ्रीडम राइट्स, आर्टिकल 19 is the first article that is ex post facto law and self incrimination। We will discuss article 20 in detail, don't worry। So article 20 and 21, these are the only two fundamental rights, these are the only two articles that are never suspended, and the first article that is suspended is article 19। तो 19, 20 and 21 एक chronological order याद रखिएगा। 19 वो आर्टिकल है जो सबसे पहले सस्पेंड होता है, एंड 20 and 21 वो है जो कभी सस्पेंड नहीं होते। इसके अलावा धीरे धीरे करके सारे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 सारे सस्पेंड हो सकते हैं। 32, all these articles can be suspended, but these two articles can never be suspended, and it is the first article which is suspended। Fundamental rights includes civil and political rights, whereas economic, social and cultural rights are included in DPSP। Okay, हमने अभी UDHR की बात की। If some of the students who have read about UDHR, जिनको पढ़ने का शौक है, means extra knowledge gain करने on social, economic and cultural rights, social, economic and cultural rights। So there are 1, 2, 3, 4, 5 types of rights, एंड इन 5 टाइप्स ऑफ राइट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स थे वो ICCPR में गए, जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट राइट्स थे वो ICSEC में। International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and these three documents conjointly made up the Bill of Rights। Bill of Rights अमेरिका वाला नहीं, International Bill of Rights, you will say International Bill of Rights। If you have not studied the International Bill of Rights, then it's your homework, guys। सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है, the classes are only for a limited tenure, so आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। Self study is something on which you have to rely, like rights of minorities, cultural minorities, educational minorities, linguistic minorities। Okay, so cultural rights are there in DPSP as well as in fundamental rights, but the majority of civil and political rights, majority of fundamental rights are civil and political in nature, majority of DPSP are social, economic and cultural in nature। We will discuss these 5 types of right again in a specific class। I will take a class in which मैं इन पांचों types के rights को समझाऊंगा। So yes, fundamental rights are mostly civil and political rights, but for examination the right answer would be mixed right, क्योंकि कुछ cultural rights भी उसमें आते हैं। Unlike DPSP, fundamental rights are justiciable by virtue of Article 32। अगर Article 32 ना होता तो ये justiciable ना होते, because Article 32 says right to constitutional remedies, that if any fundamental right is violated you can approach the Supreme Court। Okay, with the एक नया फंडामेंटल राइट ऐड करना है तो वो एक न्यू आर्टिकल ऐड करते हैं। उन्हें राइट टू एजुकेशन ऐड करना था तो उन्होंने एक न्यू आर्टिकल आर्टिकल 21A ऐड किया। बट जुडिशरी on the other hand, what the Supreme Court does, Supreme Court cannot add a new article because it is not the law making body। Supreme Court is the interpreter, not the lawmaker। Interpreter, इंटरप्रेट मतलब इंटरप्रेट करना। हम एक बात के 100 मतलब निकाल सकते हैं। द ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न इंटरप्रेटर्स। हमें नेचर नहीं इंटरप्रेटर बनाए। किसी ने मुझसे कोई बात बोली, मैं उसका कुछ और मतलब समझ सकता हूँ, हो सकता है कोई और कुछ और मतलब समझे। राइट नाउ मुझे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनमें से कुछ मेरी बात को इंटरप्रेट अलग तरीके से करेंगे और कुछ अलग तरह से। तो यस, सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इंटरप्रेट्स। सो द लैंग्वेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रेटेड बाय द Supreme Court to add new articles, to add new fundamental rights, not new articles। Article 21, which says right to life, to discuss like in Husainara Khatun versus State of Bihar। Supreme Court said that right to free legal aid, right to free legal aid पहले एक DPSP था, अब भी एक DPSP है, बट एक फंडामेंटल राइट भी है। Right to free legal aid, which is a DPSP under Article 39A।
is a fundamental right within the meaning of Article 21. Right to life includes right to free legal aid as well. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि आर्टिकल 39 है, विच इज डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल. सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे जस्टिसेबल बना सकती है? बाय रीडिंग इट विद एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 21 is obviously justiciable. So in Zusanara Khatun versus State of Bihar, added Supreme Court said that the language of Article 21, that is right to life, includes right to free legal aid as well. Similarly, Parmanand Katara, right to health. Right to health is within the language of right to life according to Supreme Court. Medha Patekar, right to water. Right to privacy? No. Right to privacy is also integral to Article 21. आर्टिकल 21 की लैंग्वेज में ही राइट टू प्राइवेसी भी आता है. पीयूसीएल, राइट टू फूड. राइट टू फूड इज विद इन द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ. दीज वर हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. सो बेसिकली इंडिया में दो पावर्स हैं जो नए फंडामेंटल राइट्स ऐड कर सकते हैं, और दोनों का ही तरीका अलग है. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज मेजर लॉ मेकिंग बॉडी. सो पार्लियामेंट को अगर एक न्यू फंडामेंटल राइट ऐड करना है तो वो एक नया आर्टिकल ऐड करते हैं, लाइक आर्टिकल 21A. जब भी अल्फाबेट किसी आर्टिकल के साथ आता है, इट मींस इट हैड बीन एडेड. एंड हाउ कैन द सुप्रीम कोर्ट डू द सेम थिंग? सुप्रीम कोर्ट कैन आल्सो ऐड अ फंडामेंटल राइट, बट दे कैन नॉट ऐड अ न्यू आर्टिकल. They can only interpret the existing article's language to add a new article. Like right to life, it is just a fundamental right, but इसकी language को interpret कर सकती है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का काम है language समझाना. तो वो इसी right to life के purview में. In the next class, we will continue with the fundamental rights part 2, in which I'm going to discuss all the important fundamental rights, some important concepts related to them that may come in your examination, that you may encounter in your examination. Okay, students, the Lawscape is a one-year comprehensive batch for CLAT 2022 starting on 10th of November, and it's a bilingual language course. So you may enroll for it. And the Legalicious, it's a 2-year program. It's also a one-year program, not a 2-year program. It's a one-year program for CLAT 2022 starting on 12th of November. Okay, it is in English, so you may enroll for it as well. And Rankers Batch 2.0, as the name is itself suggesting, this batch aims to produce rankers for CLAT 2023, a 2-year program. You will be taught from the basic foundation. आपकी foundation, आपकी नींव को मजबूत रखा जाएगा. From it would be in English language and starting on 12th of November. No, I've taken on them. Okay, the bugs bounty. If you found any inappropriate content in the class, you can report it. The link is in the description for that. Thank you guys. Thanks for being a patient listener. Thanks for being with us. Subscribe to the channel, hit the bell icon, like and share. Bye bye and good night.